are, alkaloid is a medicinal compound, right? Because maximum time alkaloid is a one of the important medicinal compound, right? It is one of the important medicinal compound, right? So alkaloid, it is clear from their name also, right? If you see here, you can clear their name also. Alkaloid means alkali. It means it is alkali like a material, right? It is alkali like a material. You can see here, right? Alkaloid, the name alkaloid, it come from because the nature of compound is alkali like, right? And how the compound behave like alkali, or how the compound behave like base, because of presence of nitrogen, right? You people already know amine or nitrogen based compound. Amine or nitrogen based compound are mainly, right, basic in their nature, right? Mainly basic in their nature, right? So alkaloid word come from alkali like material, right, or basic material. These compounds are normally isolated from plants. They are not isolated from animal. It means if we talk about origin of alkaloid, if we talk about origin of alkaloid, so this is plant origin, this is not animal origin, right? जो भी alkaloid होते हैं वो plant origin से होते हैं, plant से निकलते हैं, वो animal से नहीं निकलते हैं, right? And they are very important and very useful for medicinal purpose. Few alkaloids are toxic in their nature. बहुत कम alkaloid होते हैं जो toxic nature के होते हैं. Maximum time the alkaloids is a very useful medicines, right? They direct affect our physiological process, right? जो alkaloids होते हैं वो direct हमारी physiological जो process होती है, हमारा जो central nervous systems होता है उसे affect करते हैं, राइट? तो जिस जिस प्लांट्स में भी एल्कलॉइड पाया जाता है उस प्लांट्स को कहा जाता है इट इज अ मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स, कहा जाता है दैट प्लांट इज वेरी वेरी यूजफुल, और दैट इज वेरी मेडिसिनली, दैट इज वेरी यूजफुल, राइट? दैट अफेक्ट आवर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ह्यूमन बीइंग की या एनिमल्स की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसको अफेक्ट करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है. Sometimes we use this compounds or alkaloid as a हम इसको जो use करते हैं, sometimes we use that a pain reliever, right? जब बहुत ज्यादा pain होता है तो pain relief करने के लिए हम क्या use करते हैं? alkaloids का use करते हैं, because they direct affect our central nervous system, because they direct affect our central nervous system, they control our central nervous system, right? And why? What is the important point in alkaloid, and how do we differentiate alkaloid from other, right? So basic or very important point, that is nitrogen, right? So in this cycle of the compound, right, there exists minimum one nitrogen, there exists minimum one nitrogen, क्योंकि उस compound में क्या होता है? minimum one nitrogen होता है, राइट? तो वो जो नाइट्रोजन होता है उसके पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे बड़ा इजीली वो किसी भी स्पेसिफिक और सेलेक्टिव प्लेस पे क्या हो जाता है? एडजॉर्ब हो जाता है. दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इनसाइड आवर बॉडी वेरी इजीली, right? And then that is very useful in medicinal chemistry. Alkaloids are very useful in medicinal chemistry. You can see here, right? So if I talk about, ठीक है ना, तो as I already told, it is plant origin material, right? The alkaloids are mainly isolated or separated or extracted from plants, right? So mainly it is extracted or it is isolated from plants, right? And it is alkali like material, means it is basic in their nature. Why it is basic in their nature? Because of nitrogen, right? And you know nitrogen, then they may be work like a secondary amine, they may be work like a tertiary amine, and you people already know, right? Amines are basic in their nature, right? They are Lewis base, right? So this is alkali in their nature. You can see PPD nitrogen heterocyclic ring, right? There is always one nitrogen in heterocyclic ring of alkaloid, right? There is at least one nitrogen in heterocyclic ring of heterocyclic ring of your alkaloid, right? And this is region,
right? This is region, it is different from other natural product. It is different from other natural product because of presence. It is most important part of alkaloid. Heterocyclic nitrogen based heterocyclic ring or nitrogenous heterocyclic ring is the main constituents or main part of your alkaloid, and this is the reason why it is useful for so many types of medicinal. Physiological effect, as I already told, it affect different types of physiological process inside our body, right? हमारी बॉडी में होने वाली बहुत सारी टाइप्स की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसे अफेक्ट कर देता है, right? It change those process, right? So it is useful as a medicine. In few cases it is toxic also, right? कुछ केसेस होते हैं जहां पे टॉक्सिक भी होता है, but in maximum cases it's very useful as a medicines because it affect our physiological process inside our body, right? Physiological process inside. Stimulate central nervous system, as I already told, it affect, right? It stimulate, it catalyze, right? Our central nervous system also, it catalyze our central nervous system also, it stimulate our central nervous system also, right? And because of it stimulate our central nervous system, it means it is used as an anesthetic medicines, right? We can use that as an anesthetic, right? It is used as a pain relieving medicines, right? So we can use that because it stimulates our central nervous system, right? It stimulate our central nervous system, and then the problem of pain can relieve, right? We can relieve from pain, right? When we use alkaloids, right? And in this way we use this compound maximum time as a anesthetic compound. We use maximum time this compound as a anesthetic compound. So you can see. Now if we talk about classifications, now next point come, how do we classify, right? How do we classify alkaloid? So many types of classifications of alkaloid, right? So maximum time we classify that on the basis of nucleus or on the basis of their skeleton, on the basis of nucleus or on the basis of their skeleton, right? So on the basis of nucleus, when we classify our alkaloid, then you can see phenyl ethyl amine group, right? Some alkaloid are specified on the basis of phenyl ethyl amine group. If their phenyl group along with ethyl and along with amine, then that group of alkaloid come in the category or come under the category of phenyl ethyl amine group. First, pyrrolidine, right? If in some compound, because nitrogen is important part, right? And that nitrogen where it is important. If they are with ethyl, right? Ethyl amine form. If they are pyrrolidine form, right? So if that nitrogen part of pyrrolidine, right? So then this is called pyrrolidine group based alkaloid, right? Third one, pyridine and piperidine, right? So you can see this is third class of compound, pyridine and piperidine, right? So if these two groups present in alkaloid, then it is other class of, or it is third class of our alkaloid. Then next one, pyrrolidine, right? Then next one, pyrrolidine and pyridine, right? If these two groups exist, if these two groups exist, right, then it is other category. If quinoline, right, if quinoline exists in our alkaloid, then this is other category, right? If isoquinoline, then this is other category of alkaloid, right? If phenanthrene, then this is other category of alkaloid, right? Or if indole group, then this is other category. So on the basis of different types of nucleus, on the basis of different types of nucleus present in our alkaloid, we can classify alkaloid in 8 category. We can classify our alkaloid in 8 category, right? So if their phenyl ethyl amine group, then this is first category. If they are pyrrolidine group, then this is second category. If they are pyridine and piperidine both group in same alkaloid, then this is third category. Fourth category, if pyrrolidine or pyridine group both in same, right, alkaloid, the next one is quinoline, right? The next one isoquinoline, right? Then next one phenanthrene, right? And then next one indole, right? So in this way we can classify alkaloid on the basis of types of nucleus exist in our alkaloid, right? So 8 category of
एल्कलॉइड, राइट। तो इस तरह से 8 कैटेगरी एल्कलॉइड की हो गई, राइट। उसका जो बेसिक स्केलेटन है उसमें किस तरह का न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है उसके बेसिस पे, राइट। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी, what about next point, right? It is a very important point. I will explain, right, this point, right, because it is actually a part of our research paper, right. So how do we use different types of alkaloid, right, in our normal life? So you can see this is a leaf, right. This is a plant, right. It is very famous plant, right. Normally people use this plant for, ये कौन कर रहा है ये पेन से, right. Don't do this types of nonsense thing, right. ये रेड पेन किसने यूज किया? Okay, now you can see, right, this plant. I think you people know about this plant. This is very useful plant. This is very useful plant, right? And sometimes people use that as a medicine, but maximum time some people use this plant for some wrong things, right? तो आपको पता है ये जो भांग का पेड़ होता है, right? तो इसको कुछ लोग आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से बहुत सारी चीजें इससे बनाते हैं, एस्थेटिक बनाते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमने इस प्लांट्स का एक्सट्रैक्शन किया, राइट। आई विल डिस्कस दैट इन कमिंग पीपीटी आल्सो, राइट। एंड देन वी सीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। हमने देखा इसमें ये 3 टाइप्स के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। मेजॉरिटी में ये 3 कंपाउंड इसमें एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और फिर जब हमने देखा ये 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस प्लांट में होते हैं, तो फिर हमने इसका पहला तो क्या था, मेडिसिन, एज ए फॉर्म ऑफ मेडिसिन इसका यूज किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग इसका मिसयूज ज्यादा कर रहे थे। तो फिर हमने इसकी करूजन स्टडी की, राइट। आई विल डिस्कस दिस रिसर्च पेपर आल्सो विद यू पीपल, राइट। तो फिर हमने इसकी क्या करी, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी की, राइट। हमने इसकी क्या की, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी की। तो यू कैन सी हियर, राइट, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेशन, राइट। तो इसमें ये आपके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, यहाँ पे कुछ ये है, ये आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर बेसिस, बहुत सारी लैब्स में आपने देखा होगा। तो फिर हमने इसकी एनालिसिस की, राइट। इट इज कॉल्ड EIS स्टडी, इट इज कॉल्ड टेफल स्टडी, राइट। ये सारी स्टडी हमने इसकी की एंड देन वी डिड देयर सेम स्टडी आल्सो, राइट। सरफेस की जो स्टडी होती है कि सरफेस पे कैसे एडजॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टडी होती है। आप लोगों ने एडजॉर्प्शन पे जिन लोगों ने काम किया होगा, दे पीपल नो, राइट। सेम स्टडी करते हैं, AFM स्टडी करते हैं, बहुत सारी स्टडी करते हैं। एंड देन एट द एंड वी गिव द मैकेनिज्म of adsorption, right. ये compounds है, how that compounds adsorb on metal surface, right. So we draw a mechanism, right. I will discuss that in coming PPT, right. I will discuss this paper properly, right. तो ये actually how do we use natural product in our research, right. Natural product को किस तरह से research में use किया जाता है, राइट। तो इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज देयर सम इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि वहां पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ऐसी प्लांट्स का यूज नहीं होता है मेडिसिन की। आप देखो आजकल बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स का यूज होता है, राइट, एज ए मेडिसिन। क्यों होता है? क्योंकि उनमें कुछ केमिकल है, राइट। कुछ ये देखिए, ये केमिकल है, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें, राइट। उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से, राइट, वो बायोलॉजिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। वो जो प्लांट्स है, उसकी लीव्स है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव है। ऐसी भांग अपने भांग वाला काम नहीं करता है, कुछ तो रीजन होता है, राइट। तो वो कंपाउंड आइसोलेट करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसको एक्सप्लेन करना, ये हमारा केमिस्ट्री में काम होता है, राइट। एंड उसके बाद सम पीपल यूज दैट इन द फॉर्म ऑफ medicine, some people use that in the form of anesthetic, some people use that in the form of different types of chemistry application, right. For example, in my case I use that in the form of corrosion inhibitor, right. तो हमने जो इसका यूज किया वो एज ए corrosion inhibitor किया रिसर्च में, right. I will explain this paper also in coming PPT, right. तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि इनका बहुत तरह से अप्लाई किया जा सकता है, बहुत तरह से क्या किया जा सकता है, इन प्लांट्स का, एल्कलॉइड बेसिस प्लांट्स का यूज किया जा सकता है हमारी लाइफ में, राइट। नाउ you can see, now the point come कि how do we isolate these compounds, कैसे करके इन compounds को isolate किया जाता है, right. मैंने एक रिसर्च पेपर पहले भी आपसे एक्सप्लेन किया था कि how do we extract or how do we isolate, right, a natural product from plants.
प्लांट से नेचुरल प्रोडक्ट को कैसे आइसोलेट करते, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पेपर, राइट, more than one time in your class, right? So today I am discussing briefly about isolation process. तो isolation process में सबसे पहले क्या करते हैं, plants को लेते हैं, right? You can see here we take a plant, right? Plant, for example, dry leaf of plant, then we crush that, and after crushing process their extraction with petroleum ether, पेट्रोलियम ईथर के साथ उसका क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक बार्क ऑफ ए प्लांट और यू कैन टेक लीव ऑफ ए प्लांट. आप प्लांट की लीव ले सकते हो, आप प्लांट की बार्क ले सकते हो, आप प्लांट की रूट ले सकते हो, राइट. उसके बाद हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन विद पेट्रोलियम ईथर, बिकॉज पेट्रोलियम ईथर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है जिसको आप क्या कहते हैं, पेट्रोलियम ईथर कहते हैं, राइट. तो पेट्रोलियम ईथर ये हाईली, अगर आप पोलरिटी सीरीज देखोगे तो सबसे ऊपर जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज पेट्रोलियम ईथर, राइट. तो फिर हम पेट्रोलियम ईथर का यूज करते हैं. आपने कॉलम, एक कॉलम होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो कॉलम में क्या होता है, ऊपर से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट पैक करते हैं और नीचे से सिलिका जेल लगाते हैं, राइट. और फिर उसमें क्या करते हैं, ऊपर से, राइट, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर पोलरिटी. पोलरिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट्स को हम यूज करते हैं, राइट. तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम पेट्रोलियम ईथर. व्हेन वी यूज पेट्रोलियम ईथर, जब हम पेट्रोलियम ईथर का यूज करते हैं तो देन ऑयल or terpenoids, right, or essential oil will separate out from that extract. उस प्लांट्स में जो भी essential oil होता है, जो भी non polar compounds होता है, they may be terpenoid also, right, तो वो क्या हो जाते हैं, separate हो जाते हैं. Then we remove, you can see fat or oily or non polar material, right. तो आपने सबसे पहले पेट्रोलियम ईथर को डाला, राइट. धीरे धीरे करके क्या होता है, इल्यूशन स्टार्ट होगा, राइट. आपको जो बीकर होगा या आपका जो नीचे आपने कॉनिकल फ्लास्क लगाई होगी, उस कॉनिकल फ्लास्क में आपको नॉन पोलर कंपाउंड्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल दे मे बी टर्पिनॉइड, दे मे बी इसेंशियल ऑयल, दे मे बी फैट और समथिंग एल्स, राइट. तो इस तरह से निकलेंगे, राइट. तो फिर आप उसको क्या करेंगे, इवेपोरेट करोगे और डिस्टिलेशन करोगे. डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन के बाद आपका पेट्रोलियम सॉल्वेंट आपको रिकवर कर दोगे, राइट. एंड जो भी आपका फैट है वो आप उसे रिमूव कर दो. तो दिस इज प्रोसेस नॉर्मली वी यूज फॉर सेपरेशन. बेसिक, देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स आल्सो, राइट, बट बेसिकली एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि हम इस तरह से टर्पिनॉइड का क्या कर देंगे, आइसोलेशन कर देंगे, राइट. नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप देखिए आप. आफ्टर दैट when we do this, now what is our priority? Our priority to isolate, alkaloid. तो then how do we isolate that, right? तो उसके बाद जो रेजिड्यू बच जाएगा, प्लांट रेजिड्यू बच जाएगा, then we use their methanol, pure methanol. मिथेनॉल को डालेंगे तो जो हाईली पोलर कंपाउंड्स होंगे दे विल बी सेपरेट. स्पेशली जब आप केवल पेट्रोलियम ईथर का यूज करोगे, मिथेनॉल का यूज करोगे, वैसे नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, पोलरिटी धीरे धीरे करके इंक्रीज करते हैं, बट इन सम केसेस, राइट, इफ यू वांट टू स्पेसिफिक where we separate, give me 1 second, okay. Then there is a point where we extract with methanol, right, then we extract with methanol, right. तो methanol के साथ हम extraction करेंगे, we extract with methanol, and then after that you can see जैसे मिथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्शन करेंगे, राइट. तो देन जो हाईली पोलर कंपाउंड होंगे जैसे सेलुलोज मटेरियल, फॉर एग्जांपल सेलुलोज मटेरियल कम आउट, राइट. सेलुलोज मटेरियल क्या हो जाएगा, कम आउट हो जाएगा उसमें से, राइट. एंड वी विल सेपरेट दैट, राइट, एंड देन वी सेपरेट दैट. देन नेक्स्ट स्टेप, देन वी गेट क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट. उसके बाद हमें क्या मिलेगा, क्रूड प्लांट एक्सट्रैक्ट मिलेगा. देन इफ वी डिसॉल्व डाइल्यूट इनऑर्गेनिक एसिड, और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा उसको एसिडिफाइड करेंगे, डाइल्यूट इनऑर्गेनिक एसिड को ऐड करेंगे, एंड देन एक्सट्रैक्शन विद ईथर, देन एक्सट्रैक्शन विद, okay, so then we use ether, right. And after that when we use ether, you can see
Give me 1 second. So then next step of extraction will, so then you can see, then the ether, right, extraction with ether, and then evaporate. We evaporate and removal of non basic material, right? Whatever non basic material that we can evaporate, then non basic material, right? There may be some non basic material, you people already know, right? If we talk about alkaloid, जब हम कहते हैं कि alkaloid एक basic material है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ नॉन बेसिक मटेरियल भी होंगे, राइट, एक्सेप्ट अल्कलॉइड, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके रिमूव हो जाएंगे नॉन बेसिक मटेरियल, जैसे आप डाइल्यूट इनऑर्गेनिक एसिड डालोगे, राइट? तो एसिड सोल्यूशन ऑफ एल्कलॉइड साल्ट, राइट, देन वी गेट एसिड सोल्यूशन ऑफ एल्कलॉइड साल्ट। एल्कलॉइड साल्ट का हमें एसिड सोल्यूशन मिल जाएगा, because our compound is basic in their nature, or our alkaloid is basic in their nature, right? So because our alkaloid is basic in their nature, right, because our alkaloid is basic in their nature, right, so then after that we add NaOH, right? उसके बाद हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसमें ऐड करेंगे, right, then we add सोडियम हाइड्रोक्साइड, right, so that जो एसिडिफाई हुआ था या जो एसिडिक नेचर था वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बिकॉज हमने पहले इनऑर्गेनिक एसिड डाला, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद में हम क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन को भी उसमें मिक्स करेंगे, सो दैट न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए। एंड देन आफ्टर दैट वी एक्सट्रैक्ट our alkaloid with ether and chloroform, right? Then we fix the ratio of ether and alkaloid, chloroform of जो ether होगा उसका हम एक रेशियो करके फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, अपने alkaloid को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, right? And remaining material is aqueous residue, right? It means जो रिमेनिंग मटेरियल होगा उसमें क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक तो आपका जो एक्सट्रैक्ट है विद ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ व्हेन यू इवेपोरेट दैट एक्सट्रैक्ट व्हिच वी गेट फ्रॉम ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। जो हमने ईथर और क्लोरोफॉर्म में एक्सट्रैक्ट निकाला, जब हम उसको सेपरेट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट a mixture रह जाएंगे, राइट? तो दिस इज हाउ डू वी सेपरेट योर, अब इस तरह से हम क्या करेंगे, हाउ डू वी सेपरेट आवर कंपाउंड, राइट? हमारा हाउ डू वी सेपरेट आवर एल्कलॉइड, हम अपने एल्कलॉइड को कैसे सेपरेट करेंगे, this is method related to that, right? So this is, you can say that this is about isolation or separation of you can say isolation or separation of our alkaloid or our natural product। तो हम अपने नेचुरल प्रोडक्ट को किस तरह आइसोलेट करते हैं, किस तरह से सेपरेट करते हैं, इट इज मेथड रिलेटेड टू दैट, राइट? ये उसका क्या है, एक प्रोसीजर है, राइट? एक स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, बहुत सारी स्टेप्स का यूज करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट बनाए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल प्रिपेयर्ड एक्सट्रैक्ट, सबसे पहले आपने क्या किया, उसका एक्सट्रैक्ट बनाए। एक्सट्रैक्ट बना के उसमें से आपने जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, राइट, नॉन पोलर या इसेंशियल ऑयल है उसको, या फैट है या टर्पिनोइड है उसको सेपरेट किया विद पेट्रोलियम ईथर, आपने उसका एक्सट्रैक्शन किया विद पेट्रोलियम ईथर। समटाइम यूज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड समटाइम वी यूज अदर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, राइट? तो पेट्रोलियम ईथर में जब एक्सट्रैक्शन करोगे, क्योंकि पेट्रोलियम ईथर इज वेरी हाईली नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो पेट्रोलियम होता है वो हाईली नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो आपका जो नॉन पोलर पार्ट होगा, जो ऑयली पार्ट होगा, जो फैटी पार्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टर्पिनॉइड को या इसेंशियल ऑयल को कर देते हो, अलग कर देते हो। उसके बाद मटेरियल बचा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट में, राइट, उसमें आपने फिर क्या किया, आपने हाईली पोलर कंपाउंड है वो आपने उसमें ऐड कर दिया।
एंड दैट इज मीथनॉल। वो क्या होता है? मीथनॉल। आप उसमें मीथनॉल ऐड कर दिया। जब आपने मीथनॉल ऐड कर दिया तो जो पोलर पार्ट है उसका, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट होगा उसमें सेलुलोज मटेरियल भी होगा, राइट। उसमें क्या होगा? सेलुलोज भी होगा। सेलुलोज मींस कार्बोहाइड्रेट होगा। देयर इज ए कार्बोहाइड्रेट, देयर इज ए सेलुलोज, राइट। तो वो सेलुलोज उससे क्या हो जाएगा? जो हाईली पोलर, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कनेक्टिविटी की, राइट। तो सेलुलोज मटेरियल को उसके बाद आपने, देन फर्दर आपने क्या किया? जो क्रूड आपका जो एक्सट्रैक्ट है, जो आपका क्रूड एक्सट्रैक्ट है, राइट, क्रूड एक्सट्रैक्ट आपको मिला, उसमें आपने क्या किया? डिसॉल्व इन डाइल्यूट इनऑर्गेनिक एसिड। थोड़ा सा आपने इनऑर्गेनिक एसिड के साथ उसको क्या कर दिया? डाइल्यूट इनऑर्गेनिक एसिड के साथ आपने उसको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, राइट। जिससे उसमें जो बेसिक पार्ट है उसका, जो बेसिक पार्ट है उसका, या जो आप क्लोराइड, क्योंकि बेसिक पार्ट है, वो उससे क्या हो जाए? थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, राइट। तो उससे आपका जो बेसिक पार्ट है, सॉरी, जो बेसिक पार्ट है, जो वो अलग हो गया, और जो नॉन बेसिक पार्ट है उससे क्या हो गया? अलग हो गया, राइट। तो नॉन बेसिक पार्ट को आपने अलग कर दिया और अब आपका बेसिक पार्ट निकल गया, राइट। जो बेसिक पार्ट है वो किस फॉर्म में होगा? एसिडिक सॉल्यूशन की फॉर्म में। इट मींस नाउ योर एल्कलॉइड कम इन द फॉर्म ऑफ साल्ट विद एसिड। एसिड को मिलाते ही आपका बेस है, एल्कलॉइड क्या है? बेस है। वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? साल्ट बना देगा। तो आपको एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ एल्कलॉइड साल्ट मिल जाएगा, राइट। आपको क्या मिल जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ एल्कलॉइड साल्ट, राइट। तो एल्कलॉइड का आपको एसिडिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसको कि आप क्या कर दोगे? सेपरेट कर दोगे, राइट। आप उसको सेपरेट कर दोगे। उसके बाद थोड़ा उसमें क्या डालोगे? आप बेस डालोगे, सो दैट न्यूट्रलाइजेशन हो सके, राइट। और आपका जो एल्कलॉइड है वो उससे उसकी जो एसिडिक नेचर है वो खत्म हो, राइट। तो जैसे ही साल्ट है, फिर आपने उसमें बेस डाल दिया। जैसे ही बेस डाला तो जो आपका एसिडिक पार्ट था वो क्या हो जाएगा? सेपरेट। एंड इन दिस वे यू गेट एल्कलॉइड, राइट। उसकी प्योरिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे? आप ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में उसका एक्सट्रैक्शन करोगे। देन यू डू देयर एक्सट्रैक्शन विद ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ईथर और क्लोरोफॉर्म के साथ उसकी पोलरिटी मैच करती है। जो एल्कलॉइड होता है वो ना तो बहुत हाईली पोलर होता है और नॉन पोलर तो वो होता नहीं है, राइट। तो अगर आप प्योर मीथेनॉल डालोगे तो भी वो उसमें सेपरेट नहीं होगा। उसके लिए उसकी पोलरिटी, हर किसी की अपनी अपनी स्पेसिफिक क्या होती है? पोलरिटी होती है हर कंपाउंड, राइट। तो एल्कलॉइड की जो पोलरिटी होती है वो मैच करती है किसके साथ? ईथर एंड क्लोरोफॉर्म के मिक्सचर के साथ, राइट। देयर में बी 20:80 रेशियो ऑफ ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, राइट। क्लोरोफॉर्म और ईथर का जो 20:80 का जो रेशियो होगा, मे बी दैट मैच विद अवर एल्कलॉइड, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? अपने एल्कलॉइड को सेपरेट कर देंगे, राइट। उसके बाद उसका इवेपोरेशन करेंगे, जो सोल्यूशन मिलेगा हमको ईथर क्लोरोफॉर्म में, उसका हम जब इवेपोरेशन करेंगे, देन वी गेट ए मिक्सचर ऑफ एल्कलॉइड, देन वी गेट ए मिक्सचर ऑफ एल्कलॉइड। तो इस तरह से हमें एल्कलॉइड का क्या मिल जाएगा? मिक्सचर मिल जाएगा। देन वी गेट ए मिक्सचर ऑफ alkaloid, you can see, then we get a mixture of alkaloid, right. And during that process, right, at the end हम क्या कर देंगे? aqueous, उसमें water को mix कर देंगे। and when we add water, जब हम water को उसमें mix कर देंगे, when we add water, right, तो फिर आपका जो aqueous residue होगा वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। जो मोस्ट पोलर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो मेनली आवर फोकस ऑन द मिक्सचर ऑफ एल्कलॉइड फ्रॉम आवर प्लांट, राइट। तो प्लांट से का किस तरह से मिलता है हमें? तो दिस इज द मेथड हाउ डू वी सेपरेट एल्कलॉइड और हाउ डू वी आइसोलेट एल्कलॉइड और टर्पेनॉइड, राइट। So there may be question related to isolation process, then you need to elaborate something about आइसोलेशन प्रोसेस, राइट। तो आइसोलेशन कैसे होता है, इस तरह से आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। नाउ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, राइट, नाउ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वी विल टेक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, राइट, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड लेते हैं। क्विनोलिन, राइट, क्विनोलिन, राइट। तो क्विनोलिन जो होता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड होता है, दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस आल्सो, राइट। तो इट इज a bitter anti malarial drug,
and we separate that or we extract that from cinchona bark, right? So cinchona bark, it is a very famous plant, right? Cinchona, right? तो उसकी bark से हम एक alkaloid को extract करते हैं, isolate करते हैं, जिसका नाम क्विनोलिन होता है, right? And ये बहुत ही अच्छा एंटी मलेरियल ड्रग होता है. It is bitter एंटी मलेरियल ड्रग, बिटर एंटी मलेरियल ड्रग, राइट? काफी कड़वा होता है और ये एंटी मलेरियल मतलब मलेरिया की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत ज्यादा यूजफुल एल्कलॉइड होता है, राइट? तो we need to discuss about this drug. What about their structure? Mainly we focus on their structure. You can see here, right? जावा, राइट? तो सिनकोना जो प्लांट है मोस्टली उसको हम कहाँ से लाते हैं, राइट? वो जावा जो प्लेस है, राइट? वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ये मिलता है, बल्क मिलता है, तो वहां से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, राइट? वहां से एक्सपोर्ट किया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट, राइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, तो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. आप देखिए यहाँ पे ये आपको नेफ्थलीन की तरह एक दो रिंग दिखाई दे रही है, बेंजीन you see here, there is network problem also. Okay. You can see here, right? This is there are two ring. One ring is benzene, and second ring is you can see there is one ring is benzene, right? And methoxybenzene, you can see this side, and this side this is pyridine, right? Nitrogen. It is connected with, you can see here, it is connected with